हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा था, दैट वर इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल and dependency injection. So if you don't know about these concepts, then you can check out the last video of this series and you can find the link in the description or in the cards section. So last video में हम लोगों ने स्प्रिंग फ्रेमवर्क को लेकर डिस्कशन स्टार्ट ही करा था. So this video is all about that what is Spring Framework, why do we use Spring Framework and the architecture of Spring Framework. Okay, तो सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क. सो इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल. सपोज वी वांट टू बिल्ड अ हाउस. ठीक है, हमें एक घर बनाना है एंड वी हैव द आइडिया लाइक किस तरीके से हमारा लिविंग रूम होगा, किस तरीके से हमारा बेडरूम होगा, किस तरीके से हमारा किचन दिखने वाला है, कौन सा पेंट होगा, कहाँ पर टीवी लगेगी, कहाँ पर सोफ़ा लगेगा. वी हैव दैट ऑल प्लान इन आवर माइंड, लाइक कैसे हम लोग एक घर को बनाएंगे. ठीक है, नाउ ट्राई टू रिलेट दिस थिंग विद द एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, लेट्स से कि we have an idea that we want to create one file sharing application, and this application is like a secure file sharing application जिसमें क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र एक फाइल अपलोड करेगा ऑन सर्वर, then it will be encrypted and there will be restriction of maximum number of downloads and it will be auto deleted after a fixed period of time. ठीक है, तो इस तरीके की हम लोग एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं. नाउ जस्ट लाइक दी हाउस बिल्डिंग आइडिया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि यहाँ पर भी हमारे पास आइडिया है लाइक किस तरीके से हमारी ऐप वर्क करेगी. ओके, वी हैव द लॉजिक. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वी हैव द बिजनेस लॉजिक कि किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क करने वाली है. नाउ अगेन कम बैक टू हाउस बिल्डिंग एग्जाम्पल. सो टू इम्प्लीमेंट द आइडिया दैट वी हैव, हमें यहाँ पर एक स्ट्रक्चर चाहिए, हमें एक बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए जिस पर हम लोग ये सारी चीज़ इम्प्लीमेंट कर पाएँ. ओके, तो सपोज़ यहाँ पर हमें कोई एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देता है. अब यहाँ पर स्ट्रक्चर से मतलब है, सपोज़ यहाँ पर जो एक घर बनाने के लिए फाउंडेशन चाहिए होता है, ठीक है, वो रूम्स, ठीक है, एंड जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, प्लम्बिंग का काम होता है, ये सारी चीज़ें हमें एक कोई प्रोवाइड कर देता है. ठीक है, नाउ अब यहाँ पर वी हैव दैट बेसिक स्ट्रक्चर. सो अब हम लोग उस पर जो भी हमारा आइडिया था हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते. ठीक है, सो इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि अगर यहाँ पर हमें एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है, सो वी नीड सम काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, उस पर हम लोग इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस अगेन मूव टू एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ओके, सो what we were having the business logic कि किस तरीके से हम लोग एक फाइल शेयरिंग एप्लीकेशन को बनाएंगे. ठीक है, किस तरीके से हमारी एप्लीकेशन वर्क करेगी. बट here also we don't have the basic or necessary setup that is required to build our application, just like the house building example. Again, suppose यहाँ पर भी हमें कोई प्रोवाइड कर देता है ये बेसिक और जो नेसेसरी सेटअप है वो हमें कोई प्रोवाइड कर देता है, देन वी कैन स्टार्ट बिल्डिंग आवर एप्लीकेशन. सो हेयर स्प्रिंग फ्रेमवर्क कम्स इनटू द पिक्चर. अब यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है. स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स ऑल द नेसेसरी सेटअप दैट इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम व्हेन वी स्टार्ट बिल्डिंग आवर एप्लीकेशन फ्रॉम स्क्रैच. सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का काम क्या है कि इट प्रोवाइड्स द सेटअप on top of which we can start building our application. Okay, so this was in simple words. Now let us see some technical words also about the Spring Framework. So Spring Framework is an open source infrastructure for building Java applications. It addresses the complexity of enterprise level applications by providing a modular, lightweight framework that handles under the hood tasks so that developer can focus on business logic only. ठीक है, तो यही चीज़ हम लोगों ने समझी कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्या करता है. जो भी एक रिपीटेटिव टास्क है, जो भी एक कॉम्प्लेक्स सेटअप है जो कि प्रोवाइड करना है एक डेवलपर को सो दैट डेवलपर कैन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस लॉजिक, वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है. ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने समझ लिया दैट व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क.
Now let's see that why do we use Spring Framework. Okay, so here are the top 4 reasons that why we use Spring Framework. Okay, first one is लूज कपलिंग. So इसको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था दैट अगर यहाँ पर कोई भी क्लास है, ठीक है, उसमें जो भी डिपेंडेंसीज हैं, इफ दे आर टाइटली कपल्ड देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर लूज कपलिंग होती है एंड थ्रू डिपेंडेंसी इंजेक्शन वी कैन प्रोवाइड ऑल द डिपेंडेंसीज. एंड इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ लूज कपलिंग जो हमारा कोड है वो मॉड्यूलर होता है एंड इट बिकम ईजी टू मेंटेन एंड ऑल्सो टेस्टेबल. ठीक है, इसको हम लोग फर्दर जब डेवलपमेंट कर रहे होंगे तब हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे. ठीक है, the next point is that it reduces boilerplate code. So what is boilerplate code? Boilerplate code क्या होता है? It is a repetitive code that we have to do every time when we start developing application. So basically it eliminates all that boilerplate code. Next point is integration. So it is easy to integrate with other modules. So इसको भी हम लोग आगे डेवलपमेंट के टाइम पर डिस्कस करेंगे. Then we have declarative support. So what is declarative support? Suppose when we are using Spring Framework, so we need to notify कि एक particular class है, this class will be managed by Spring. So हम लोग उसको simply कैसे कर सकते हैं? With the help of Java annotations only. With the help of Java annotations. Mark that class that it will be managed by Spring. So again, जब हम लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर रहे होंगे, so we will understand all these points in a much more clear way. Okay, so अभी के लिए just remember that these are the 4 top reasons that why do we use Spring Framework. Okay, that is loose coupling, it reduces boilerplate code, easy to integrate with other modules, and it provides declarative support. So it might seem overwhelming for the first time, but when we will start discussing different modules that are present in this Spring Framework, then यहाँ पर जितने भी modules है वो हमें जितने भी चीज़ें हैं वो mention है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें easily समझ में आने लगेंगी. Okay, so let us have a quick overview of this. So we have data access module, okay, which is responsible for connecting with databases and perform operations. Okay, so we have data access module. Then we have web module, which is responsible for building REST API, and we will work a lot with data access and web module. Okay, then we have Spring Security. This is responsible for securing our endpoints, securing our APIs, basically securing our application. Okay, then we have Spring Integration, Spring Cloud, Spring Batch. ठीक है, so ये सारे different modules हैं. We will discuss in upcoming videos about these modules. Then we have aspect oriented programming, that is AOP. So suppose you want to implement some functionality without changing the code base, so that can also be done with this aspect oriented programming. We will see this in upcoming videos. Okay, then here comes the important part, that is the core container. So this part is responsible where all the magic of Spring Framework happens. Okay, so we are going to discuss this Spring container in the next video, and like what are beans, what is a context. So we are going to discuss all these in next video. Then we have the test module. So for testing out different logic, we have the test module also present in this architecture. So this was the quick overview of Spring Framework architecture. We are also going to discuss the Spring AI module, which is a new module. So we are going to discuss this also, and we will be developing project